हेलो ऑल, वेलकम टू डाइव टू लर्न। हम जो है आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के मॉडल्स के ऊपर और यह जो है इसका पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट्स में जो है हमने काफ़ी कुछ जो है कवर कर लिया है। डाइव टू लर्न के आप जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अब तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जा करके डाउनलोड ज़रूर कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। आज जो है हम रिमेनिंग 3 मॉडल डिस्कस करेंगे और इसको करने के बाद जो है आपका पूरा का पूरा जो है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के मॉडल्स हैं पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। और इसके बाद जो है आपके बिजनेस ट्रांजिशन मॉडल भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। सो आज हम जो है स्टार्ट करेंगे क्यूबलर-रॉस 5 स्टेज मॉडल से। इसके बाद जो है हमने स्कॉट का मॉडल देखना है, स्कॉट एंड जेफी चेंज मॉडल एंड सैटिर्स चेंज मॉडल। इससे पहले के पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो इससे पहले के 3 पार्ट्स में हमने ये सारा कुछ कवर कर लिया है, तो उसको जाकर के जरूर देखें। इसी प्लेलिस्ट में आपको वो सारे पार्ट्स के भी लिंक मिल जाएंगे। स्टार्टिंग विथ क्यूबलर-रॉस 5 स्टेज मॉडल। देखिए, this framework was initially created by psychiatrist Elizabeth Kübler-Ross and was originally known as 5 stages of grief। ये 5 अवस्था जो कि ग्रीफ के हैं, हम काफ़ी डिटेल में इस पे बात करेंगे। Presently, Kübler-Ross change curve can be used as a reliable change management strategy. So all these stages you should be very thorough. Please take a note of all the stages in this particular 5 stages of grief. It is essential to understand that we do not move along the change in a linear direction or a step by step. A person tends to move into stages in random order and may sometimes even return back to the previous stage after a certain point in time. Each stage can last for a different time period, and it is possible for a person to get stuck in a particular stage and not move on from there. So ये जो 5 स्टेज ऑफ ग्रीफ होते हैं, तो एक इंसान कहने का मतलब है कहीं भी जाकर के स्टक हो सकता है। यह जो है बिल्कुल रैंडम नहीं है कि पहले आप डिनायल करेंगे उसके बाद ही आपको गुस्सा आएगा और उसके बाद ही जो है आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा कोई ऑर्डर यहाँ पर फॉलो नहीं होता है फ्रेंड्स। तो ये 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ क्या है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। Denial is the first stage of this model and it is the stage when person is unable to accept the news। आप जो है चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद आता है आपको गुस्सा। So when the news is actually gets absorbed, then the first reaction is usually that of anger। तब आप जो है गुस्सा हो जाते हो। Then is the bargaining। अब जो है आप बार्गेनिंग स्टार्ट कर लेते हो कि अच्छा इतना चेंज नहीं करेंगे, ना मेरा ना तेरा, इसको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन पर जो है आप लेकर जाते हो। अगर आपकी बात जो है सामने वाला बार्गेनिंग काम नहीं कर रहा है, आपका जो नहीं चल रहा है बार्गेनिंग में, ना तेरा ना मेरा में, केवल जो है सामने वाले का ही चल रहा है, तब जो है आपको क्या चले जाते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। एंड व्हेन वन रियलाइजेस दैट देयर इज नो पॉइंट बीइंग डिप्रेस्ड, चेंज तो आना ही है, ही मे फाइनली एक्सेप्ट दैट व्हाट इज हैपनिंग एंड मे आल्सो बिगिन टू रिजाइन फॉर इट। So then it's your acceptance। तो ये थे 5 अवस्थाएं फ्रेंड्स। Denial, then your anger, then you start bargaining, then you get depressed if the bargaining does not work, and then you finally accept it। These are 5 stages of grief, I'm so sorry। Now looking at the business application of Kübler-Ross model of change। So first stage में क्या होता है, इसको आपको stage wise याद रखना है friends। This is the first stage when employee may be in a position of shock or denial। He may not be able to digest the fact that he has to undergo change, adopt something new, so employee gets fussy about it। He is denying, he is constantly criticizing the change। They may need time to adjust for a change। They may deny that they don't need this change। इसलिए यहाँ पे मैनेजर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनको समझाने में कि चेंज क्यों जरूरी है। Communication from management is a must। Employer must make it a point to avoid overwhelming employees with lot of information in one go, and they should go slowly and gradually convincing the employee that यह change लाना क्यों जरूरी है। Second stage में जो है क्या हो रहा है, अब उनको जो है यहाँ पे एंगर वाला सेंटिमेंट वाला जो है स्टेज है। When finally the gravity of situation settles in, the reality becomes clear, employees or the workers may feel fear from what lies ahead। Now the change is certain and they are in the mode of anger and resentment। They have been in a comfortable zone for so long, knowing that they need to learn, change, adopt, and this may let them become angry। This stage has to be managed very sensibly by the management and organizations because some employees tend to vent their anger a too little harshly। This could create chaos। To avoid it,
Careful planning must be done in advance. Clear communication again plays a very crucial role. Support should be the focus of the organization as this level as well. Organizations must understand that it is a natural reaction and with time it shall pass away and make for acceptance. So सबसे पहले स्टेज में क्या था? सबसे पहले स्टेज में employees are in the stage of shock and denial. Again, communication from management is very important. A lot of information should not be given at one go. Second stage में they are now aware that the change is likely to happen and they may sometimes become employees may sometimes becomes a bit harsh to accept the change. So organizations also should give them some time to overcome come to the terms with their anger and such sentiments. Then is the third stage, when employee finally understands the change, realize how they must adopt to the new situation and circumstances, and they try to find बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो टू फिट देम टू अडॉप्ट. तो यहाँ पे क्या हो जाता है? बार्गेनिंग वाला स्टेज. दे मे ट्राई टू बार्गेन विथ मैनेजमेंट दैट not a lot is compromised. They may try to learn what they think is important. But employed as a part of management, your role should be to ensure that everyone gets the best training so that the change is incorporated and can run successfully. A training stage may take time for employees figuring out their best option for a comfortable tenure ahead with the focus. A company cannot rush employees to learn quickly or adopt changes fast. It cannot expect 100% productivity during this phase because the new change is just introduced in the organization. There is a fourth stage. Fourth stage में क्या होता है? लर्निंग फेज में नॉट ऑलवेज बी वेरी हैप्पी, बिकॉज कभी भी अगर आपको कुछ न्यू चीज़ों को एक्सपोजर मिलता है, न्यू चीज़ें सीखनी होती है, तो आप थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा करके सीखते हैं. तो यहाँ पे जो है आपका मोटिवेशन कम हो सकता है, एक्साइटमेंट मोरल जो है लो हो सकता है, एंड दिस फेज इज नॉट ईजी फॉर वर्कफोर्स as well. So hence more exciting training can be made. उनको जो है ट्रेनिंग का इन्वायरमेंट जो है काफी लाइवली रखा जाए. एम्प्लॉय में रियलाइज हाउ दैट देयर इज नो वे आउट ऑफ द सिचुएशन एंड दिस मे प्रूव डिफिकल्ट फॉर सम ऑफ देम टू हैंडल. Fifth stage is the stage where managers or workplaces wait for a while after introducing a change into the enterprise. People finally begin to embrace the change, accept the change, start building new hopes and aspirations. They realize and understand that the importance of change and resign towards it. While some may resign back because of lack of other options, others may resign the reality in a new positive way. So everybody will not stick to you, some may leave the organization. The management will finally begin to see the benefits of the hard work put in by them. So far the team is showing improvement and now overall productivity begins to improve. The road may have been rocky, but it is now the time to celebrate, move forward with a bright future and expect more profits around the corner. So this was the five stages of grief. It started with denial. There was fear, shock, initially on the part of employees. Then they were angry that this changes is likely to happen. So there was sentiments of anger, frustration, anxiety. Then they moved to depression. This was the lowest, where the productivity falls to the lowest. Then they start to bargaining and finally acceptance and continuing with the new plans and moving on. So ये थे Kübler-Ross के जो है 5 मॉडल्स. यहाँ पे 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ थे और इस मॉडल का जो जनक है वो थे एलिजाबेथ Kübler-Ross. ये चीजें जो आपको याद रखनी है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. मूविंग ऑन टू द आवर नेक्स्ट मॉडल, दैट इज योर स्कॉट एंड जेफीज चेंज मॉडल. तो यहाँ पर आप देखेंगे स्कॉट एंड जेफी चेंज मॉडल, जिसको स्कॉट एंड जेफी रेसिस्टेंस साइकिल भी कहते हैं. This was developed by Cynthia Scott and Dennis Jaffe. Please again take a note of it here. And the article they first introduced it was Survival and Thrive in the Times of Change. Scott and Jaffe change model is based on the grief curve developed by Kübler-Ross. तो लास्ट मॉडल हमने यही डिस्कस किया था, Kübler-Ross का मॉडल डिस्कस किया था. इसी का जो कर्व था, हमने क्या देखा था, हमने स्टार्ट कहाँ से हुआ था, वहाँ हम एक स्टेप वापस जा करके देखते हैं. डिनाइल से स्टार्ट हुआ था, तो दिस कर्व इट इज
बेस्ड ऑन। सो इसका एडवांस वर्जन है स्कॉट एंड जेफीज मॉडल। यहाँ पर भी आपको एक कर्व सा देखने को मिल रहा है। इस कर्व में क्या बातें की थी हमने? डिनायल, एंगर, डिप्रेशन, बार्गेनिंग एंड एक्सेप्टेंस की बातें की थी। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेंट फॉर्म में दिख रहा है। तो चलिए इसको जो है थोड़ा डीप में समझते हैं। In a similar manner, Scott and Jaffe describe the entire psychological process and how individual responds to change. The key highlights are as follows. The change occurs over a period of time which is indicated on a horizontal axis from left to right. Left में क्या है आपका? Past है, और right में क्या है आपका? Future है. The left side of horizontal axis focuses on past while the right side focuses on future. अब बात करते हैं वर्टिकल एक्सिस फोकसेस ऑन जनरल अवेयरनेस एंड सजेस्ट that within the passage of time our priority changed from focusing on external environment to becoming more introspective and then once again paying importance to the external environment. That's how it goes. Scott and Jaffe's resistance cycle shows 4 stages people go through when undergoing organizational change. तो यहाँ पे 4 stages की बात की है। कुबलर एंड रॉस ने जो है 5 stages की बात की थी, जबकि स्कॉट एंड जेफी ने इनको 4 stages में सम अप किया है। सो इस तरीके से आप इसको अलग अलग नोट ले ले। टिपिकल मॉडल होते हैं फ्रेंड्स, और इसका नोट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोशिश यही कीजिए कि जब आप वीडियो के साथ साथ ही इसके स्वयं खुद नोट्स ले, क्योंकि जब आप साथ साथ में लिखते हैं तो आपका जो है ब्रेन और हैंड टुगेदर काम करता है और आप इसको रिटेन कर पाते हैं एग्जाम में, इवन इफ यू डोंट रिवाइज क्विकली। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस में पढ़ना होता है, टाइम नहीं मिलता है रिविजन का, लेकिन अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ हमेशा बेहतर होती है। नोट मेकिंग ज़रूर करते रहें, स्पेशली ऑफ द कॉम्प्लेक्स थिंग्स, स्पेशली ऑफ द थिंग्स विच यू टेंड टू फॉरगेट ड्यूरिंग एग्जाम, क्योंकि ये मॉडल जो है बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते। सम ऑफ द मॉडल्स हाँ हमने पढ़ा है, हमने लेविन्स मॉडल पढ़ा हुआ है, हमने काफ़ी सारे मॉडल्स पढ़े भी हुए हैं, लेकिन कुछ मॉडल्स जो है इंटायरली आपके लिए हो सकता है न्यू हो, जो कि आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा होगा। ईच फेज रिप्रेजेंट्स part of the journey we go through. We come to terms with the change. It involves letting go of the past and welcoming the future. So talking about the 4 stages, it starts with denial, resist, explore and commit. यहाँ पे आप देख सकते हैं denial, then you are resisting, then you again start to explore and you then move to commit. So इसी order में आपको याद रखना है denial, resist, explore and commit. Let's talk a bit about this. ये तो ऑलरेडी हमने क्यूबलर्स मॉडल में भी हमने देखा था। हमने कमिट को जो है टर्म्स अलग थे लेकिन कर्व जो है सिमिलर था। This is the stage in which the feeling of the change does not easily sink in and we ignore to change completely if nothing has happened. We are in the mode of denial. We don't want to accept it. Then we are accepting is with a resistance. The resistance is usually exhibited through emotion upsurges. तो anger वाले स्टेज को यहाँ पे क्लब कर दिया गया है, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, देन यू आर नॉट बार्गेनिंग एट दिस स्टेज बट यू आर expressing yourself in terms of emotion. It is the stage when organization witnesses a loss in the productivity and overall stability in the business environment due to this resistance. Then after that you come to terms, you tend to explore what is a new mechanism, like you are very sensitive and tentative for a wrong step taken in the people may once again revert back. लेकिन अगर आपको exploring में जो है आपको कुछ भी गड़बड़ दिखा तो you tend to go back again to the old ways. This and then the last stage. This is a stage during which individuals are re-empowered with accept new methods and processes. It's a very important that commitment towards the change can be established by backing it up with appropriate recognition, clearly defining roles and accountability of the employees. तो ये थे 4 स्टेज। एक बार वापस सम अप कर लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पे पहले पास्ट से लेकर के प्रेजेंट की ओर जाना है। सबसे पहले जो है आप डिनाइल के मोड में होते हैं, जहाँ पे आप डेंजर या फियर जो है आप ऐसे सेंटिमेंट्स आपके होते हैं, आपको चेंजेस अडॉप्ट ही नहीं करना होता है। देन यू स्टार्ट रेजिस्टिंग में जो है आप अपना गुस्सा दिखाते हैं, यहाँ पे जो है आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो होती है। देन यू टेंड टू एक्सप्लोर व्हाट इज न्यू मेथड, लाइक इसको ये जो है हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। यू स्टार्ट टू गेन द एनर्जी एंड फाइनली कमिटमेंट टू new heights, you come to terms of the new changes, and then lies your future ahead. So from past you move towards the future, from danger, fear, such kind of
emotions, you move towards possibilities, opportunities. So this was the model all about. Then we move to the last model for this particular video, that is Satir change model. यहाँ पर भी जो है आपको 5 stages देखने को मिलते हैं. पहला stage है late status quo, then is your resistance, chaos, integration and then new status quo. So late status quo से we have moved to new status quo. Again 5 stages here Satir's change model में. This is the graph of your performance. Please take a note of it. Let's understand this model in deep. Satir's change model rooted in the behavioral psychology. This model more people centric than management framework. So again this is more of a people centric model. The purpose of this model is to focus on understanding of thought and feeling behind the behavioral change. The Satir model theorizes that when expected or significant change happens, individuals go through a series of predictable changes: late status quo, resistance, chaos, integration and new status quo. So these are the 5 stages we are going to talk about in this particular model rooted in okay, so starting with the stages, that is the first stage, that is your late status quo. So late status quo में क्या है? This phase describes how things are shortly before you become aware of the major disruptive change. यहाँ पर जो है आपको धीरे धीरे पता चलता है. This phrase can be characterized by business as usual. जो चीजें चल रही है BAU कहते हैं शॉर्ट में. Things are happening in the normal way they do every day. Each day is similar to the day before and you know what to expect. You know how to perform your role. You're comfortable performing. So you are at a straight line. Then you enter resistance. Resistance you see here marked by your pink and you are exactly going down. So we enter resistance phase when something happens. So you suddenly it shatters your comfort of the late status quo. Perhaps a major event has happened or you have become aware of something new information which you did not have previously. This new awareness is called a foreign element. ये new awareness को क्या कहते हैं यहाँ पे? Foreign element. A foreign element is named such because it comes from outside how things are currently done. A foreign element always requires a response. Response में क्या होगा? Response होगा chaos. If foreign element obtains critical way, it means that the change is going to happen. Organization is going to enter in the chaos phase. Suddenly there is no longer BAU. BAU जो है आपकी stability जो है, आपकी स्थिरता जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई है. यहाँ पर आप देखेंगे old ways of working no longer yields result. Old relationships break down. Old ways of doing things are no longer appropriate. Your performance drops, so the performance of those around you also undergo same kind of chaos. During the chaos phase you feel stressed, confused, similar to what models we have discussed in past. Chaos में भी हम जो है ऐसी हमारे emotions आते हैं. We are panicked. Managers should help team members acknowledge their feelings to reach out to the support network. They should also help them to understand that these feelings are normal. किसी को भी जो है change पसंद नहीं होता और change के बाद जो है confusion, chaos आना जो है normal है और इसका जो है कोई quick fix नहीं है friends. Then moving on to the integration stage. Integration में क्या होता है? Chaos में हमने क्या देखा था? Chaos में हमने एक lot of ideas आते हैं. Eventually one of these ideas will be a transforming ideas. Chaos में जो है इस चीजों को हम fix कैसे कर सकते हैं? From there we discover an idea that is a transforming idea. A transforming idea is one that helps you to make sense of the foreign element. Foreign element जिसकी वजह से यह resistance arise हुआ, जिसकी वजह से हमने अपना late status को खोया, इसको जो है हम कैसे सेंस कर सकते हैं, कैसे जो है ये फॉरेन एलिमेंट क्या था और कैसे हम इसको कोप अप करें फॉरेन एलिमेंट. दैट बिकम्स योर ट्रांसफॉर्मिंग आइडिया एंड फ्रॉम देयर द इंटीग्रेशन स्टार्ट्स. वंस यू कम विद द फॉरेन टर्म्स विद द फॉरेन एलिमेंट, फ्रॉम देयर यू पिक अप टू एंड मूव टू योर इंटीग्रेशन स्टेज marked in green. So transforming idea gives you way out of the chaos. It makes it possible to see what it is that you need to do to move forward. The key to this phase is to be able to see how the foreign element can benefit you by a transforming idea. The transforming idea makes you excited. You start trying out new ways of working and you maybe form new relationship. Your performance improves dramatically in a
upward direction as you acquire new skills and rapidly improve on them, and then becomes your from your late status quo you rise to new status quo. So that is the last stage. In this phase, new ways of working become embedded. So that becomes your new normal. What was once a new skill becomes a second nature. As a part of this, new assumptions are formed. Your performance begins to level off. See, you have risen to a new level here as you master a new skill and a new status quo forms. So that was your scatters model. एक बार sum up कर लेते हैं scatters change model को. It starts with late status quo, then a new foreign element is introduced. You are uncomfortable about, you enter a chaotic stage, and once you come in terms with your foreign element, you develop a transforming idea, and this transforming idea takes you to integration stage. You acquire a new skill, and in the final stage you become master in it, so that becomes your new status quo. सो ये थे सैटर चेंज मॉडल. 3 मॉडल को जो है हमने डिस्कस किया है. कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें आप रीच आउट कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें. साथ ही साथ कोई भी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें रीच आउट करें. थैंक यू.